Okay, guys, let's start. I think others they may join late. We are missing Amit, Sonam. Still fine. We can start. Uh, so I hope you understood the concept still here. Coming back to my question here, guys. Now let's say this subnet, I have erased the old diagram. इसमें थोड़े से changes किए for to make it easier for you guys to understand. Now let's say that I have applied. I hope all of you can see my screen and can hear me. Yeah. Yes. So now let's say that this NSG2 network security group 2, I have applied this NSG on subnet B. Now there's a user who wants to take remote of this PC. Is it possible? Obviously provided that he has access, उसको सारे उस user ID password वगैरह सब पता है. That is implied. I'm just talking about from the network perspective. चलो उसको अगर user ID नहीं भी पता होगा तो at least he will be able to go till here. ये रिमोट लेके जो यूजर आईडी और पासवर्ड वाला पॉपअप आता है, at least that user will be able to go till that screen. Okay, so let's consider that user has user ID and password वगैरह सब sufficient access है. Now the question is, I have applied this NSG network security group 2 on subnet B. Will this user be able to, any user from here, be able to take RDP of this machine? Yes. Yes, clear to all of you? Anyone has doubt? Anyone who thinks हाँ या नहीं ऐसे कुछ? Right, so this all machines under this subnet, इनका जो है RDP लिया जा सकता है because NSG में 3389 allowed है. Okay, can I use a website from this machine? अगर इसके ऊपर कोई वेबसाइट होस्ट कर रखी है तो मैं ब्राउजर से उस इसको ये कर लूंगा, एड्रेस टाइप कर दूंगा. So will I be able to use that if I type this address http www.test.com? If there is any website hosted on that computer, तो will I be able to access from the network point of view? ठीक है, website चल रही है नहीं चल रही है, not my concern. Looking at this, will I be able to access? Because NSG2 is applied. Yeah, you can. Okay. Anyone thinks that we cannot? Yes, guys, anyone thinks we cannot? And can I use this website? Same subnet, same, everything is same. Can I use this website? No. No. Why not? Because 443 is not cleared under. Yes, support is not available in the NSG. Yes, so I hope it is clear to all of you. Right, guys? So if on this subnet, if I have assigned this network security group, which means all these machines are free for RDP. यहाँ से RDP हो सकता है, ठीक है, इन machines का RDP लिया जा सकता है और इन machines की website को भी access किया जा सकता है, provided they have one website. running website है नहीं है, that is a different thing. Network point of view से access किया जा सकता है, but the same website HTTP वाली website access की जा सकती है, but HTTPS वाली website नहीं access की जा सकती. क्यों? HTTP का प्रोटोकॉल है 80 और HTTPS का प्रोटोकॉल है, what is the protocol or port number 443. for this protocol? 443. 443 is the port number for HTTPS protocol. तो यहाँ पर वो अलाउड नहीं है, इसलिए HTTPS www.test.com नहीं वर्क करेगा, but HTTP वर्क करेगा, RDP वर्क करेगा. Okay, now the coming back to this question जो हम लोगों ने तब डिस्कस कर रहे थे, that we can have multiple NSGs on multiple resources. जैसे यहाँ पर अगर मैंने एक NSG लगा दिया है तो मशीन पर आकर मैं दूसरा NSG अप्लाई कर सकता हूँ. Obviously I can apply the same NSG, but same NSG अप्लाई करने से कोई मेरा रिक्वायरमेंट नहीं ये फुलफिल होगा. Now my requirement is कि ठीक है यार, यहाँ पर आपने असाइन कर दिया ये, assume that these are 50 servers. Let's say these are 50 servers. I am saying कि out of these 50 servers बाकी सब तो ठीक है, ये जो एक सर्वर है ना, ये this is very crucial server. And I do not want anyone to take RDP on this server. I do not want anyone to take RDP on this server.
So can I apply this NSG here? यहाँ पर, though it is going from subnet, but do not consider subnet. I'm just directly talking about a machine. वो बस diagram वैसा cross हो रहा है यहाँ पर, but this is directly going to this machine. Is it possible to have one subnet on to have one NSG, NSG2 on subnet, and NSG1 on this machine? Is it possible? We just discussed. Yes, yes, it is possible. It is possible, right, guys? Now the question is, if someone is trying to take RDP to this machine, will he be able to take RDP? No. No, right? And if someone is trying to access HTTPS on this machine, will he be able to access this HTTPS? I think yes, because 443 is allowed in NSG1. Okay, Samitra says yes. What do you think, Amit? Yogesh? Akib bhai? Yes, it's possible. Possible. Yeah, possible. Okay. What about you, Jafar bhai? Juhi? Sonam? Yes, it's possible. Yes, bhai. Okay. Yes, Yogesh bhai, do you have something else to say, or do you also think it's possible? Possible. Okay, I think it's थोड़ा सा diagram ऊपर नीचे बनानी चाहिए थी मैंने. You guys would have given correct answer. But let's see. I'll इस diagram को हम रखते हैं यहीं पर. इसको मैं एक और अच्छे तरीके से बनाता हूँ diagram, and then I'll ask the same question. It is not possible. Yes. One question. Yes, I. Like as you said earlier, like you cannot apply multiple energies on a subnet or On one resource, resource. right? Yes, on one resource. Right. Yeah, but now, as you said, like NSG2 is applied on subnet and NSG1 is applied on the resource. So here, I mean, there are multiple. I mean, These are two anyhow, different resources. Subnet is a resource itself, and virtual machine, it is a resource itself. We cannot apply two NSGs on one resource. Okay. Clear? Hai? Yeah, I got it. Still, if sorry, didn't mean to interrupt. You were asking something. No Continue. problem. No, like what I thought is like if anyhow NSG2 is applied on the subnet level, so the resources under which comes under the subnet will be replicated. I mean, as per the hierarchy. So Got why it. then NSG1 on a single resource? That I was asking. Got it. No, but it is possible. Okay, so let me Okay. draw this diagram again. उसको हम वैसे ही रखते हैं. First thing, the answer is incorrect. Okay. The question was, can a person access 443 here? So answer is, and you guys said yes. Answer is incorrect. I'll explain why. Same इसको मैं replicate करता हूँ यहाँ पर. Let's say this is my bungalow or VNet, जो भी आप लोगों को इसको समझना है. This is representing the outer boundary. ठीक है, subnet. This is a subnet. These are my machines. And this, in this case, for understanding, you can say कि ये कोई एक बिल्डिंग है, मेन बिल्डिंग, उसके अंदर ये कोई छोटे से घर है, बंगलो से रो हाउस है, whatever you guys want to consider. This is your main gate. Okay, and these are your gates for your row houses. 1, 2, 3, 4 वगैरह जो कुछ है. So this is your main gate. Okay, this is your building. Your main gate. This is your bungalow A, B, C, and D. Fine. Now look at this, guys. This is your subnet. Okay, this is your subnet. Now here is a gate. इस गेट की की जो है, consider this one, guys. इसको I will explain it with the ports again, but this is just for your understanding. इस ports के साथ मैं फिर से आप लोगों को explain कर दूंगा. First scenario was that there is a person जिसके पास ये main, there is a person जिसके पास ये main gate की key है. Okay,
there is a person who has access to this main gate. इस main gate की key इस person के पास है. Example, Arbaz. Arbaz has the key for this main gate. He can enter here, and now he has access to gate bungalow A, B, C, and D. यहाँ पर भी है. Is it simple that he can enter here and he can access all of these? Pretty simple, no Yep. doubt, right? Now the Yes. owner of bungalow C, it says I don't like this guy. I do not want him to access my house, or bungalow D. So what you do here is you take that key from Arbaz. Arbaz से आपने इसका key वापस ले लिया. Now can Arbaz come here and access other bungalows and along with D, or what sort of access he has now? Except D, he can access D. other bungalows. Exactly, right? Now there is another person. And he doesn't have access to this main gate. He doesn't have access, or he doesn't have the key for this main gate, but he has access to bungalow A, B, and C, and D. Now the question is, can he access these bungalows? He doesn't have access here. No, no, no. Okay, so I hope it is clear now. Now let me explain it to you in VNet and subnet उस वाले resource में. ठीक है? I hope it is clear. I will erase it, or okay, we have scope. I'll create another VNet here. So this is my VNet. Under VNet, we have a subnet. It is taking time, guys, but it is very important topic. So you will have to understand. Interview में बहुत detail में explain करना पड़ता है आपको कई बार. Okay, we have to avoid confusion. I'm simply making one subnet, one VNet. बहुत simple इसको मैं ये रख रहा हूँ. We have machine 1. We have machine 2. We have machine 3, 4, and all are connected to this subnet. Okay. On this subnet, we have NSG1. To avoid confusion, I'm not even writing other ports. This is NSG Network Security Group 1. और हमारे NSG 1 में क्या है? 443 blocked है. ठीक है? 443 blocked है. So we are not using 443 at all in NSG 1. So we are just using 80. We are using 3389 here. ठीक है, that's all. ये दो काफी है एग्जाम्पल के लिए. 3389 if we are using here, right? यहाँ पर क्या कंफ्यूजन हो गया ना सिर्फ कि आप लोगों को ये नंबर आई थिंक ऊपर नीचे ये लगे. सी व्हाट एम आई ट्राइंग टू से हियर इज सबनेट लेवल पे 443 अलाउड है क्या यहाँ पर गाइस? सबनेट लेवल पे कौन सा एनएसजी है? 2. NSG2. NSG2 में 443 अलाउड है? नहीं. No. So, अगर वो मशीन पे अलाउड कर भी रखा है आपने तो वो ट्रैफिक यहाँ से पास ही नहीं होने वाली है. ठीक है, आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग इट. मैं बस जस्ट बता रहा था. आई होप अब तक आपको वैसे ही क्लियर हो गया है आंसर, but still I will show it to you guys. So this is NSG1 जिसमें 80 allowed है and 3389 allowed है. ठीक है. Now I am saying कि यार ये जो मेरी मशीन है ना, this machine, I do not want anyone to take remote of that machine. So what I do, let's say यहाँ पर 100 machines है, इसलिए मैं इसमें तो रूल नहीं चेंज करने वाला हूँ और इस पे एक और सिक्योरिटी ग्रुप मैं लगा नहीं सकता हूँ. So what am I doing कि 99 machines को मैंने छोड़ दिया, इस एक मशीन के निक पर आकर मैंने एक और NSG अप्लाई कर दिया. Now this NSG says I'm allowing, this NSG says I'm allowing क्या है ऊपर 80. ठीक है, I'm allowing 80. 3389 नहीं. क्यों? क्योंकि I want to block that. और साथ में मैंने 443 भी छोड़ दिया. चलो ठीक है. Now if a traffic comes to this machine, filtering कैसे होगी वो मैं बताता हूँ आपको. Filtering definitely यहाँ से होगी. If a 3389 request यहाँ से आ रही है इस सबनेट पे, यहाँ से पास होगी 3389 की रिक्वेस्ट. What do you think guys? सबनेट 1 पे 3389 का रिक्वेस्ट पास होगा क्या? Yes. Yes. Why? क्योंकि यहाँ पर अलाउड है. वो रिक्वेस्ट अगर यहाँ जाती है तो भी पास होगी, यहाँ जाती है तो भी पास होगी. क्यों? इनका अपना कोई नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप नहीं है. They are
relying on this network security group. अगर इसने पास बोल दिया तो ये भी अपने आप में पास बोल देंगे, इसने पास बोल दिया तो ये भी पास बोलेंगे. But when this comes to this machine, यहाँ पर क्या ब्लॉकेज होगा कि ठीक है यार आपको यहाँ तो 3389 का परमिशन मिल गई है, but on this machine you do not have 3389. Why? Because that port is not mentioned here. That port is not mentioned in my allowed list. समझ रहे हो आप कि मेन गेट में तो ये आ गया, बट इस वाले का की इसके पास नहीं है. So this is one scenario. And the next one I was talking about कि 443 इन पोर्ट्स पे तो वैसे ही नहीं चल रहा है 443, ठीक है, क्योंकि इन पे वैसे ही कुछ ओपन है नहीं, कुछ यही नहीं है. But if someone says कि I have access to 443 on this machine and I want to access, ट्रैफिक आपका डायरेक्टली ऐसे नहीं आ रहा है. अंडरस्टैंड दिस. ट्रैफिक आपका जो है हमेशा यहीं से आ रहा है, सबनेट. So to go here, to go to any of these machine, first subnet will check कि 443 का access है या नहीं है. So will this request pass from here for 443 No. के, right? तो जब यहाँ से पास ही नहीं हो रहा है तो वो यहाँ तक आ भी पाएगा क्या? मतलब ये जो आपका ये है NSG है, it won't be able to check कि कोई रिक्वेस्ट आया है, उसको पास करना है या नहीं करना. वो रिक्वेस्ट ही आपका यहीं पर रिक्वेस्ट आपका ब्लॉक हो रहा है, आपका रिक्वेस्ट यहाँ पर ब्लॉक हो रहा है. Is it clear guys to all of you? Yeah. Sure. Anyone who did not understand अभी तक? Sonam, Sumaya, what about you? Are you guys getting it? कोई confusion? Understood. Yes guys, what about others? Anyone who did not understand? Understood. Okay. So now let's go and we'll see NSG portal पे कैसा दिखता है. How do we add roles? So I'll quickly explain it to you guys कि how do I plan to complete this. I have told you already that this is the time consuming वाला, सबसे time consuming वाला practical है. Because now see just to understand theory इतना time लग गया हम लोगों को, right? Now we will create NSGs. पहले मैं आपको उसके रूल्स वगैरह बताऊंगा, ठीक है, रूल्स कैसे बनते हैं, हाउ डू यू ऐड देम. अगर कोई रूल कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है तो देन वो रूल जो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है उस कॉन्फ्लिक्ट में कौन सा रूल किसको ये करेगा, ओवरराइड करेगा. एंड देन उसके बाद हम लोग इन NSGs को लिटरली अप्लाई करके देखेंगे. सो आई विल हैव टू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन उस पे 3389 सबनेट पे, सेम जो हम लोगों ने यहाँ पर ये किया है. आई विल अप्लाई वन NSG ऑन माई सबनेट, जहां पर हम इसको 3389 अलाउ करेंगे, उसमें 2 मशीन रखेंगे और 2 में से किसी एक पे एक और NSG अप्लाई करके उस पे 3389 को हम ब्लॉक करेंगे. एंड यू विल बी एबल टू सी that you are able to take remote to this machine but not to this machine. ठीक है, so this is going to take time. So anyone did not understand या कोई भी confusion है, let me know and have patience. It is a long topic and it is going to time. There is no shortcut for this. And when I do practical, I would request you guys to participate and or do your own practical. You can do that. Okay. So now let's go to portal and we'll see how to create an NSG, network security group. I can create it from here. From where else can I create an NSG guys? कहाँ पर बन सकता है और NSG कहाँ से बन सकता है, कितने options है? If I create a new virtual machine, do I get an option while creating a virtual machine to create NSG? Yes guys, do I get an option to create an NSG while creating a virtual machine? You have been creating virtual machines now. Yes, we do. Which tab? In networking. Yeah, in the networking, yeah. Okay. Right guys, please keep practicing. If you practice, ये आप लोगों के लिए वैसे ही easy हो जाएगा. See, if you keep no network security group, basic एक network security group बनेगा. उस basic में क्या आपको allow करना है, बस यही पूछ रहा है वो. ये allow करना है, कुछ default जो allow होता है that we will read. और आपको advanced details में अगर जाना है, so you can create one from here or you can use an existing one from here or you can create one from here. Okay. So this is one place you can create. Another thing is you can go here, search for network security group. Here it is. And you can create one. First, let me delete this one.
Let's see if will I be able to delete this, guys? Do you think I will be able to delete this? If it is attached to any subnet, will you be able to delete it? This one I think we have already detached. If it is attached to any subnet, can we delete it? By the way, where can I check कि कितने subnet से या किस machine से जुड़ा है? Can anyone tell me? Your answer is there on the screen. Under the inbound security rules. Associated with Security rules. No, you don't have to go to rules. Yes, associated with. Whoever answered that was correct. It is associated with one network interface. It is not associated with any subnet. And which network interface? You can come here and check. कि मेरे इस network interface से जुड़ा हुआ है. Is it connected to any subnet? No, it is not connected to any subnet. Do I want to connect it to any subnet? I can do that. So I can select a VM here. So there are two methods. You can either go to that subnet and attach a network security group, or you come to a network security group and then you attach it to a virtual network and then a subnet. You cannot attach it directly to a virtual network. It has to be a subnet. Okay, so these are already created. Now let us create a new one. So I click on create. I'll select my subscription. And what will I consider while selecting a resource group? Do I have to consider anything, any technical factor while selecting a resource group? No, I don't have to. Technical factor कुछ नहीं होगा उसमें. Billing वगैरह का factor हो सकता है या फिर management वाला factor हो सकता है. ठीक है. The name I'll give, I think it's okay. Region, guys. Does it matter? What factors will I keep in my mind while selecting a region? या बस जो अच्छा लगा उसमें बना दूं? It has to be in the same region. Same to what? Factors, I mean, you need to see subnets about and latency. virtual machines which we will attach to this NSG. Right. जिस सबनेट से आपको अटैच करना है, जिस वर्चुअल मशीन्स के लिए आप बना रहे हो, let's say you already have 100 virtual machines ईस्ट यूएस में, और उसके लिए अब रिक्वायरमेंट आया कि आप NSG बनाओ कि इन 100 वर्चुअल मशीन से इंटरनेट यूज नहीं होना चाहिए. राइट. तो आपका रिक्वायरमेंट आपके पास ऑलरेडी आ गया, आपके टिकट में डिटेल्स होगी. दैट टाइम इफ यू गो अहेड एंड क्रिएट इट इन ऑस्ट्रेलिया सेंट्रल, इज इट यूजफुल टू यू? No. No, right? So as of now we'll create it in central India. इसको हम डिलीट करने वाले हैं जब हम वर्चुअल मशीन्स के साथ बनाएंगे, तब we'll see in details. So I click on next. These are the details we'll select. Click on next. Tags I have already explained. यहाँ पर आप लिख सकते हो कि क्या किस रीजन के लिए बना रहे हो, इसका पर्पस क्या है, और इसका कौन सा रिसोर्स ग्रुप के लिए बना रहे हो, किसी भी तरह की डिटेल्स आप दे सकते हो. फ्री फील्ड है वो. रिव्यू एंड क्रिएट. प्लीज प्रैक्टिस दिस गाइस. एटलीस्ट कुछ नहीं तो एक रिसोर्स नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप बनाकर देखो आप लोग. कुछ नहीं तो एटलीस्ट बेसिक वाला ये जितने 4 स्टेप्स इसको करके देखो. बट मेक इट अ हैबिट टू लॉग इन टू योर पोर्टल ऑन डेली बेसिस. अदरवाइज यू विल स्टार्ट फॉरगेटिंग थिंग्स. और एक इंटरव्यू में एक थोड़ा सा करेक्ट अप्रोच भी जाता है. आई मीन व्हाट इफ कोई ऐसा अब तक पूछा नहीं है लेकिन किसी ने ऐसे जनरली पूछ लिया, व्हाट डू यू थिंक हाउ मच टाइम इट टेक्स टू क्रिएट एन एनएसजी. अगर आपने पोर्टल पे कभी देखा ही नहीं होगा तो आप किस अंदाजे से टाइम दोगे? अब कितना टाइम लगा? हाउ मच टाइम डिड इट टेक जस्ट टू क्रिएट एनएसजी? इट हार्डली टुक अ मिनट, राइट, टू डिप्लॉय कंप्लीटली. हाँ, इसके रूल्स वगैरह बनाना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट हाउ मच टाइम इट टुक टू डिप्लॉय? हार्डली अ मिनट. इसको अगर आप 1 घंटा बोल दोगे, कुछ बोल दोगे, the other person will understand that you haven't worked on this. So now let's look at these options. Move
You can move a resource group, you can move it to another subscription, and you can move it to region also. Region भी move किया जा सकता है, but that does not mean you create it in some other region उसके बाद move करते. Better don't do that. Delete, you can do it from here. Refresh, all of you know what is it. Feedback we have covered. This is the overview. Activity log में same चीज है जो virtual machine के activity log में होते हैं, वही यहाँ पर IAM में same चीजें होगी. Tags same, diagnose वाला जो है same. ये आप लोगों को हर resource में जाकर देखना है. ठीक है. If you are genuinely practicing for preparing for interviews, make sure you go to all resources जितने भी हम practice कर रहे हैं, and you go to this diagnose and solve problem. You will come to know कि NSG में किस तरह के issues आते हैं. Interview question आता है कि ठीक है, you have worked on NSG, so what kind of issues did you face? अगर आपने काम ही नहीं किया, आप नहीं बता पाओगे. But this is the way. You can come here and then you can tell it कि हाँ मुझको इस टाइप के इश्यूज आते थे. किस टाइप के? माय इशू इज मे बी आई नीड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी रूल्स. सी यहाँ पर आपको मिल गया कि हाउ टू डू दैट, एंड हाउ टू डू दैट उसके लिए आप ट्रबल शूटिंग पे क्लिक करोगे, आपको स्टेप्स भी मिल जाएंगे. आप इसमें से 2 या 4 याद कर लो, दैट शुड बी इनफ फॉर यू. नाउ टॉकिंग अबाउट सिक्योरिटी रूल्स. व्हाट आर द सिक्योरिटी रूल्स? मॉनिटरिंग गाइस वी विल डू सेपरेटली. ठीक है. किसी भी रिसोर्स का मॉनिटरिंग पार्ट हम अभी नहीं कवर करने वाले हैं. मॉनिटरिंग हम लास्ट में एज अ टॉपिक एक कवर करेंगे, और मॉनिटरिंग भी सबके लिए सेम है. जैसे ये सेक्शन सबके लिए सेम है, मॉनिटरिंग सबके लिए सेम है. ठीक है. सो मॉनिटरिंग वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट. नाउ वी हैव ओनली 10 minutes left. Let's see. Let me cover these two first, और इनबाउंड और आउटबाउंड रूल्स को हम कल करते हैं. ठीक है. देखिए सबसे ज्यादा मेजर चीजें इसी में है, ज्यादा डिस्कशन और सब कुछ ज्यादा इसी में. आई हैव टू एक्सप्लेन इट टू यू गाइस. व्हाट आर द प्रायोरिटीज? नेम कुछ भी हो सकता है. सो व्हाट आर दिस नेटवर्क इंटरफेसेस? नेटवर्क इंटरफेसेस क्या है? ये सेक्शन में आपको ये दिखाई देगा कि आपका ये NSG किस नेटवर्क इंटरफेसेस से जुड़ा हुआ है. सो कैन आई हैव मल्टीपल NICs हियर गाइस? इज इट पॉसिबल टू हैव मल्टीपल NICs हियर? I think yes. Why do you think? Are you not sure? I mean, it's the same question, just थोड़ा सा ट्विस्ट किया है. Yes guys, can we see multiple NICs here? Is it possible? Technically possible है कि मुझको एक NSG से affiliated multiple NIC मिले. Is it possible? Yes, Yes. it's possible. Yes, it is possible. Yes, why not? We already saw it here, right? कि एक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप जो है मल्टीपल NSGs पे लग सकता है, मल्टीपल सबनेट्स पे लग सकता है. तो वही यहाँ पर दिखाई देगा. There are options that you can go to NIC and assign one NSG, or you can come to NSG and assign those NICs. You just have to click on associate. जितने भी NIC आपको अवेलेबल दिखेंगे. Why do you think now I can't see any NIC here? Though I have 2 or 3 NICs in my subscription, but I don't see any NIC here. Why do you think that is the case? Region is different. That could be the one reason. But I'm saying कि चलो उनका भी region same है. Then what? They already have their own network security groups. That is the reason. जब भी हमने वर्चुअल मशीन बनाया उसके साथ हमने एक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप अटैच किया, और एक NIC पे 2 बार अटैच नहीं हो सकते, इसलिए वो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई भी नहीं दे रहा है. क्लियर है? देन सबनेट्स. ये क्या बता रहा है कि कौन से सबनेट्स इससे एसोसिएटेड है. सो डू आई सी एनी सबनेट्स एसोसिएटेड विद दिस एज ऑफ नाउ? No. If I have to associate, I'll have to just click on associate. I'll have to select a VNet here and a subnet, जैसा last time देखा था. Now it is not appearing. Why? Because Central India में मेरे पास वैसे ही कोई VNet नहीं है. So this region doesn't have any VNet. Hence, I am not able to see anything. Is it clear, guys, to all of you? Yes. Okay. Now properties, basic चीज है. Property में इसका आपको रिसोर्स ग्रुप दिख जाएगा, सब्सक्रिप्शन नेम दिख जाएगा, सब्सक्रिप्शन ID. ये जब प्रोग्रामेटिक एक्सेस यूज करने हम लगेंगे, जैसे टेराफॉर्म वगैरह, PowerShell, तब इंस्टेड ऑफ नेम इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड टू यूज IDs. देन सब्सक्रिप्शन, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर दिख रही है. Okay, this is properties. I think guys we will not be able to cover inbound and outbound. हम शुरू भी नहीं कर पाएंगे आज इसको. We'll do it tomorrow. So let me quickly cover logs and then we'll finish it for today.
So one thing, lock is it works in the same manner or same fashion for every resource. So what I'm explaining now, do not restrict it with your NSGs. Lock हर जगह आपके काम में आता है, ठीक है? Now let's say that you have created your NSG, आपने उसके inbound और outbound rules काफी एक डिटेल डिस्कशन के बाद फिगर आउट कर लिए, 50-60 यहाँ पर ऐड कर लिए, 10-12 यहाँ पर ऐड कर लिए, सब कुछ हो गया, इसमें कोई चेंजेस करना ही नहीं है आपको. All you have to do or all you want your junior engineers to do is जब भी उनको बोला जाए कि भाई इस सबनेट से असाइन करो, तो यहाँ पर आके इस सबनेट को असाइन करना है, इस मशीन को अटैच करो तो इस मशीन को अटैच करना है. Either they go on that subnet and attach it, or they come to this network security group and attach that subnet to it. ठीक है, इसके अलावा उनसे कोई चेंजेस एक्सपेक्टेड है ही नहीं. So that time you can put a lock on any resource, जो मतलब full and final बन गया है, अब इसके बाद इसमें कोई चेंजेस नहीं है. So you can add a lock, you can give any name. ठीक है, टेस्ट मैं इसको नाम देता हूँ टेस्ट. वी आर एडिंग रीड ओनली. ठीक है, लॉक के दो टाइप है, रीड ओनली. इफ आई क्लिक ऑन रीड ओनली, इसका क्या मतलब हुआ? नाउ एनीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एक्सेस लेवल, वो अगर ओनर भी है तब भी इस रिसोर्स ग्रुप को, इस एनएसजी किसी को डिलीट नहीं कर पाएगा. डू यू सी गाइस? I am not able to, I am the owner on the subscription, I am owner on this group. Even Sumaya can try deleting it, they will not be able to delete it. It is for accidental जो deletion होता है ना, उसको avoid करने के लिए आप बोल सकते हो. ठीक है, so this is read only. In read only का सिर्फ मतलब delete नहीं होना नहीं है. मैं if I come here and let me try adding some rule. You see, I can't even change anything. I can't delete any rule. I can't add any rule. Nothing. What I can do is just assign it on a subnet or an interface. This is what my read only rule says. Now I say कि यार read only बहुत ज़्यादा strict हो गया. I want them to update something, delete something, but they should not be able to delete my this one NSG. Then you can use this test नाम कुछ भी दे सकते हो आप, ठीक है? That delete वाला log. इससे क्या होगा? The moment you type delete वाला log, you will be able to come here and add something. You see, it has been added. You can come and delete something, but you cannot delete this. Is it deleted? Fail to delete. It is locked. So you see, what does it mean? You cannot delete anything. If I have kept it read only, तब आप ना delete कर सकते हो ना add कर सकते हो. If you keep it on delete, तो आप edit तो कर सकते हो, delete नहीं कर सकते. Not only that, you can't even delete your whole network security group. You see, delete option जो है अपने आप में ये हो गया. हाँ, but someone who has access can come here and remove that log. So this is not access वाला issue नहीं है guys. You can say कि यार जिसके पास access हो तो आके भी delete कर सकता है. Yes, he can. This is to prevent your accidental deletion. जल्दी जल्दी में आपने बस डिलीट कर दिया, and then you realize, so to avoid that, जो चीज ऑलरेडी बन गई है, to avoid deletion of that, we have this lock feature. And I told you this is not only restricted to your NSG, this is for your virtual machine, for storage, for anything and everything. Works in the same manner. Okay guys, anyone has any doubt? So we'll finish it for today. Tomorrow we'll discuss inbound and outbound rules. Okay. Anyone has any Okay. doubt? Okay. Please try to create some at least some network security group वगैरह कुछ उसको create करके देखो आप लोग, and let's see how it works for you guys. Okay, I'll stop the session now. Thank you. Thank you. Yeah, thank you. Thank you.